हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग एक्सप्लानेशन लिख रहे हैं। नहीं, 2 एक दिन डिस्टर्ब हो गया, शादी ब्याह का चक्कर था। अब जो है हम फिर शुरू कर रहे हैं बेटा। तो बताइए कहाँ तक लिखा था बेटा? द पासिंग ऑफ अर्थर का एक स्टेंजा हो गया था, नहीं? तो अब आगे लिखते हैं बेटा, लिख लो, कलम कागज आ गई हाथ में, शुरू किया जाए। बढ़िया राइटिंग लिखना बेटा, जैसा हमने बताया वैसे लिखना, नंबर भी आना चाहिए, नहीं तो बड़ी बेइज्जती होगी यार, समझा करो। अच्छा बताओ, अपने गुरु की बेइज्जती बर्दाश्त करोगे? गुरु की बेइज्जती थोड़ी बर्दाश्त करना, ठीक है? तो शुरू करते हैं बेटा। वेरी गुड, देखो बेटा, आंसर नंबर 2 जो भी है, आंसर नंबर 2, बड़ा ब्रैकेट, एक्सप्लेनेशन डैश पोएट्री, लिख लिया? अब लिखो बेटा हैंड्स। हैंड्स के आगे लिखो बेटा, इफ नोइंग डैश डैश फेयरवेल तक। इफ नोइंग डैश डैश फेयरवेल तक, लिख दिया? आदि और अंत हो गया। हैंड्स माने क्या बताया था? आद्यांत, आदि और अंत। अब नीचे हैंड आउट, हैंड्स के नीचे रेफरेंस अंडरलाइन कर दो। शुरू करें, देखो बेटा, these concluding lines, these concluding lines are extracted, these concluding lines are extracted from the poem, The Passing of Arthur, from the poem The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson, who was one of the greatest poets, of Victorian age, who was one of the greatest poets of Victorian age. लिख दिया बेटा? पाठ का नाम, लेखक का नाम सिंगल इन्वर्टेड कामा में कर दो। कर दिया? हो गया बेटा? तो अब आप लिखें कॉन्टेक्स्ट, शुरू करें। Addressing his faithful soldier, named Sir Bedivere, named क्या बेटा? Sir Bedivere. King Arthur says that man is better than man, एक चलना, man
is better than sheep or goat. Man is better than sheep or goat because man has brain. Man has brain to decide what is right and what is wrong. Man has brain to decide what is right and what is wrong. प्रोग्राम कॉन्टेक्स्ट में आ गया। अरे जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी आ रहा है, वैसे से लिख रहे हो। जब आप लिखा करो तो समझा करो कि हम लिख क्या रहे हैं। यह कला होनी चाहिए आपके अंदर। पाठक पढ़ रहे हो तो एक एक चीज समझा भी करो ना बेटा। लिखते समय केवल रटना नहीं चाहिए बेटा। लिखते समय आप यह भी सोचा करें कि हम जो लिख रहे हैं वो है क्या चीज। हमारी बात सुनो बेटा। अब हेडिंग डालो बेटा एक्सप्लेनेशन। शुरू करें। Explanation. In the opinion of Arthur, in the opinion of Arthur, comma, a legendary king, comma, those people who believe in the existence of Almighty God. Those people who believe in the existence of Almighty God but do not raise their hands to pray to God for their own welfare, and for the goodness of their friends. फिर एक बार, those people who believe in the existence of Almighty God but do not raise their hands to pray to God for their own welfare as well as for the goodness of their friends, are none but sheep or goats. Sheep or goats. लिख लिया प्रोग्राम।
addressing, remember, addressing his faithful soldier named Sir Bedivere, addressing his faithful soldier named Sir Bedivere, wounded Arthur says that he is neither a sheep nor a goat nor his enemy. Addressing his faithful soldier named Sir Bedivere, wounded Arthur says that he is neither a sheep nor a goat nor his enemy. So he should go and pray to God for the consolation and comfort of his soul, for the console and comfort of his soul. Program. Because every living creature of this world, because every living creature of this world is tied around the lotus feet of God, around the lotus feet of God, with the golden chain of prayer, with the golden chain of prayer. With the golden chain of prayer. So he should go. And raise his voice. Like a fountain. So he should go and raise his voice like a fountain to pray to God. Like a fountain to pray to God for the consolation of his soul. For the consolation of his soul. It is possible that God may excuse his guilt. God may excuse his guilt. ईश्वर उसके पाप को क्या कर दे, माफ कर दे. पढ़ा saying so. पढ़ा saying so. Wounded Arthur with his three queens. Wounded Arthur with his three queens moves towards unknown land.
लिख लिया बेटा, आ गया समझ में। अब नीचे लिखो नोट्स। नोट्स के नीचे लिखो बेटा टाइप ऑफ पोएम, डैश करके ए ब्लैंक वर्स, ए ब्लैंक वर्स लिख दिया। उसके नीचे लिखो बेटा, बोले फिगर्स ऑफ स्पीच, डैश करके लिखो, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, फिगर्स ऑफ राइम स्कीम है। अरे टाइप ऑफ पोएम डैश करके ए ब्लैंक वर्ड्स लिख दिया। अब उसके नीचे लिखो राइम स्कीम। इस पार्ट में कोई राइम स्कीम नहीं है, अब हेडिंग आपने डाल दिया तो राइम स्कीम लिखो इररेगुलर, IRREGU, इररेगुलर लिख दिया। अब हेड डालो बेटा फिगर्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच में लिखो बेटा सिमिली, सिमिली लिख दिया। उसके नीचे हेड डालो बेटा, हेडिंग डालो डिक्शन, डिक्शन क्या लिखो सिंपल कामा स्वीट म्यूजिकल मेलोडियस इंस्पायरिंग एंड ल्यूसिड लिख दिया। आई विल नोट द पर्पस, by composing the poem Alfred Lord Tennyson, by composing the poem, comma लगा देना, by composing the poem, comma Alfred Lord Tennyson has taught us, has taught us that prayer does miracle, prayer does miracle, प्रार्थना अद्भुत कारनामे करती है। आ गया सर में। अब इसको फिर कॉपी पे लिख करके हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजिए। और ध्यान रहे ये जो स्टैंजा आज दिखाया ये मोस्ट खतरनाक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया से लिखकर हमारे पास भेजो, तब हम समझेंगे कि हमारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। थैंक यू।